Pakistani community in New York staged a protest outside UN headquarters demanding the Pakistani government submit a request for TPS status for more than 62,000 Pakistani immigrants living illegally in the United States. The protest was held when Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari visited the United Nations. The protest was attended by a large number of Pakistani American women. The protesters were raising slogans against the government of Pakistan's inability in protecting the interests of Pakistanis living abroad. They demanded Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari act promptly. Foreign Minister ढूंढ के लाओ. We want TPS. We want TPS. We want TPS. Pakistani. Speakers on this occasion highlighted the importance of Temporary Protected Status TPS for Pakistanis living without documents in the United States. हम टीपीएस के नारे लगा रहे हैं. हम टीपीएस और एसएसआर का जो प्रोग्राम है उसके हसूल के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और हम चाहते हैं कि जितने भी अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं, बिला कागजात लोग मौजूद हैं अमेरिका के अंदर, और साथ ही साथ जितने भी लोग जो स्टूडेंट्स हैं जो F1 वीज़ा स्टेटस के ऊपर पाकिस्तान से अमेरिका पढ़ने के लिए आए हैं, उनको टीपीएस और एसएसआर का प्रोग्राम फराहम किया जाए. इस वक्त हम क्यों टीपीएस और एसएसआर की डिमांड कर रहे हैं? क्योंकि आप सबको मालूम है कि पिछले साल कितने बड़े लेवल पर पाकिस्तान जो है वो सैलाब से मुतासिर हुआ और कितना ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान में लोगों को उठाना पड़ा. ना वहाँ पर अब खाने के लिए खाना है मौजूद है, ना लोगों के पास घर मौजूद है, ना बच्चों के पास तालीम मौजूद है, ना पीने के लिए साफ पानी मौजूद है. और ये सारे मसले हैं जो पाकिस्तान में लोगों को इस वक्त उनसे गुजरना पड़ रहा है. और इसका जो सारा का सारा इम्पैक्ट है वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर लोगों पर नहीं आता, वो जो उनके प्यारे रहने वाले पूरी दुनिया में हैं उनके ऊपर भी आता है. और हम वही लोग हैं, उनके प्यारे हैं जो यहाँ पर अमेरिका में मुकीम हैं, और हमें उनका दर्द महसूस होता है, जिसकी वजह से हम पिछले एक साल से जितना भी यहाँ पर कम्युनिटी कर सकी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी अपने लोगों के लिए पाकिस्तान में उन्होंने किया है. पर अगर आप बिला कागजात यहाँ पर रह रहे हो तो आप कितना ही कुछ कर पाओगे, क्योंकि आपके पास तो लीगल स्टेटस भी नहीं है यहाँ पर काम करने का. तो आप किस तरीके से उन लोगों की मदद कर पाओगे जो इतने बुरे हालात से पाकिस्तान में गुजर रहे हैं? तो यही हमारी डिमांड है कि पाकिस्तान एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा है. लोग तो मदद कर रहे हैं, पर क्या हुकूमत सोई हुई है? किधर है हुकूमत अपने लोगों के लिए? ना वो पाकिस्तान में लोगों की मदद कर रही है और ना जो उनके बासी और मुल्कों में रहते हैं वहां पर उनकी मदद कर रही है. तो हमारी गुजारिश है फॉरेन मिनिस्टर से कि हमें एक सफ़े का लेटर चाहिए जिसकी बुनियाद पर 60,000 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर इतना टीपीएस का जो है और एसएसआर तो 10,000 से भी ज़्यादा यहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिनको उसका फ़ायदा होगा. और हम जो अपने लोग हैं, अपने प्यारे हैं, उनकी ज़्यादा मदद कर पाएंगे पीछे घर में. और यही हम चाहते हैं. हम सब यहाँ पर मजबूरी की हालत में आए हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जिनके पास कागजात नहीं हैं, ख़ास तौर पर वो स्टूडेंट्स जो यहाँ पर F1 स्टेटस पर पढ़ रहे हैं. हम मजबूरी की हालत में अपने मुल्क से निकले हैं, पर हम अपने मुल्क का साथ नहीं छोड़ना चाहते, हम अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ना चाहते. तो प्लीज़ हमारी आवाज़ सुनिए, प्लीज़ हमारी आवाज़ को इस तरीके से इग्नोर ना किया जाए. बिलावल भुट्टो साहब यहाँ पर मौजूद हैं, वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं हमारे मुल्क के, और ये हमारे लोग हैं हमारे मुल्क के. ये सब औरतें हैं जो अफेक्ट हो रही हैं इन सारी चीज़ों से, जिनकी फैमिलियाँ अफेक्ट हो रही हैं इन सारी चीज़ों के. और औरतों के इस जो है जो वर्ल्ड इंटरनेशनल वर्किंग वुमेन डे है उसके ऊपर हमारी आवाज़ सुनिए, पाकिस्तानी औरतों की आवाज़ सुनिए, और हमारी इसमें मदद की जाए कि टीपीएस और एसएसआर का प्रोग्राम जो है उसके लिए एक जो है कदम आगे बढ़ाया जाए. अस्सलाम वालेकुम. मैं अपने पासवो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यहाँ पे शामिल हुई और मैं प्रेसिडेंट पासवो ऑर्गेनाइजेशन की. तो हम अपने हक के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं. वो ख़वातीन या वो पाकिस्तानी जो कि इस 62,000 के करीब है और उनके पास पेपर नहीं है, और उनके बिहाफ पे हम लोग यहाँ पे खड़े हैं कि उनको टीपीएस दिया जाए और एसएसआर उसकी भी वो जो है वो हमें पेपर चाहिए, ताकि कि उनको ये डर ना हो कि वो डिपोर्ट हो जाएंगे, इसलिए वो सामने नहीं आ रहे.
तो उसके लिए हमारा ये नारा है कि यूएनओ के सामने कि हम लोग अपने वज़ीरे ख़ारजा जो हैं हमारे बिलावल साहब वो आए और हमें ये लेके दें पेपर। However, my parents are immigrants. They have been hardworking and courageous to exist in this society. We all know how many hardships immigrants face. All I would like to say is that we all should stand up and raise our voices to support support TPS and SSR. I think that it's a great opportunity for students and immigrants who are here who have not gone back to Pakistan for a very long time, and they miss their family and they miss their friends, they miss their country, and because of just not having legal documents, they're not able to go because they're afraid that they won't be able to come back. So I think that everybody that's here today, we're here to support our brothers and sisters, and we hope that today will push our foreign minister to finally just do one simple thing, which is just a letter or an email, and it's a very simple step, but God knows why one simple step is not occurring, to finally give again our brothers and sisters the opportunity to go back to their country and finally be with their family members. आज मैं पासो की तरफ से इधर यूएन सामने खड़ी हूँ और मैं खुद सिटीज़न हूँ, लेकिन मैं आज अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए आई हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जिनके पास पेपर नहीं होते उनके लिए कितनी मुश्किलात होती हैं अमेरिका में, उनको यहाँ रहना है क्योंकि हमारे पाकिस्तान की इतने हालात ख़राब हैं जिसकी वजह से वो रहना चाहते हैं इधर, और मैं चाहती हूँ कि उनको TPS मिलना चाहिए, उनको पेपर मिलने चाहिए 3 साल के लिए, वो भी इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सके। प्लीज़ बिलावल भुट्टो से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हम लोगों की हेल्प करें, हम लोग आप लोगों की हेल्प करेंगे, प्लीज़ आप हमारी हेल्प करें। थैंक यू सो मच। I love the fact that so many of us came together, so many women, and happy belated Women's Day to all of you that came here together. It is so wonderful to see this. It genuinely makes me happy, makes my heart happy that we are doing all this collectively for our community to make a difference here. So I would like to start with a little personal story. My mother brought me here when I was 13. My mother was a phenomenal, strong, fierce, single mother. And she brought us here for us to have a better life. And she wanted us as women to have more control over our lives, and so we came here. Now my mother, for 8 years, she waited to get her documents so she could go visit her family back in Pakistan. Now she missed so many weddings and so many funerals. She survived through FaceTime and through video calls, and it was so sad to see her crying over every Eid, every event. And 8 years later, my mother actually passed away before she could get her documents. So the point of this is that there are so many other women and men like my mother who could not get their documents, who could not say goodbye to their families. She could not visit her parents' grave, and it is the saddest thing that still so many people have to go through that. Maybe they will run out of time before they can go visit their family back home. So for that reason, this is a very vulnerable community. You don't see people come together every day and talk about these issues. So it is so important that we amplify their voices, we become their voices, and we make this happen together. Thank you. Please, request. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम अपनी आखिरी स्पीकर जिनकी इतनी ज़्यादा काविश रही है हम सबको इकट्ठा करने में, मैं अपनी बहन इरम को जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है अपना की उनको दावत देना चाहूँगी कि वो यहाँ पर आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होगा क्योंकि मेरी तकरीर थोड़ी सी लंबी होगी, बट आई रियली वांट दैट to go forward. Okay ji, Assalamu alaikum everyone. So I'm gonna speak in English and later on a little bit in Urdu. I want to start by saying I'm gonna go back 1 year. What happened and how happened and what are the after effects. So the August of 2022 flooding was one of the largest natural disasters which has been witnessed with Pakistanis. During the 76 years of its independence, Pakistan never witnessed such a disaster and devastation. Flooding has left 1/3 of Pakistan underwater and devastated the country's healthcare system, education system, transportation, agriculture,
everything, all the major infrastructures have been impacted because of those floods. 1 in every 7 Pakistanis has been impacted by the flooding. This has displaced 7.9 million people, impacted more than 33 million people. And thousands of people died. The actual number of the deaths are not on the records because in many villages, whole families were died and there was nobody to report that data. The government of Pakistan does not have the actual number of how many lives we lost during those floods in so many rural areas where there was a complete blockage of everything. Hundreds of thousands of homes and many public health facilities, water systems and schools have been destroyed or damaged. Nearly 15 million people in flood-affected areas need emergency food assistance, while an estimated 9 million people are being pushed into monetary poverty and learning losses from the floods. That's the story what happened last year, almost a year now. Now they're killing people with the... Such a devastation could not go over in few months or few years. It is a long-term process. Pakistan emits less than 1% of the world's planet warming, but it is the 8th most vulnerable nation to the climate crisis. Meanwhile, US is responsible for the largest share of historical emissions. It is on the record, everybody can go and check. The designation of TPS and SSR would allow Pakistani immigrants, including students, the ability to work in the US and provide relief to their families back home, and as well as they will be helpful for the Pakistani economy as well. We all are very aware how bad the political and economical situation of Pakistan is there. Thousands of people are waiting to barely put the food at the table. They are not able to bring the food with a minimum wage of 15,000 Pakistani rupees. How a household member is able to sustain and live. That is the reason more suicides are happening every other day. We are hearing stories that the father killed himself and the children as well. A mother killed herself and her young adolescent children as well. That is the real fact. That is the level of the poverty, instability and economic crisis and unavailability of the jobs for our young youth. That is the reason our youth are forced to immigrate to different countries. And when they come here, they fear a lot of many challenges. There is a system in US that you can apply for public benefits. There is a system in US that you can apply for senior housing. There is a system in US that the women who are victims of domestic violence or intimate partner violence, they can get all those benefits. There is a system in the US government, in New York State and many other states to help our students go for paid internships opportunities, work with SYEP, DYCD and programs like that and live a dignifiable life. But what is happening on the grounds with our thousands, like 62,000 plus undocumented Pakistanis living in the United States and more than 10,000 Pakistani students living across the nation are unable to access all these mainstream benefits they could be entitled to if they will get the TPS status or the SSR status. That is the reason you see this big crowd around me, all these working women. We all are not undocumented, but we are here on behalf of our brothers and sisters, those who are struggling every day and night and cannot fulfill their own living expenses. They cannot go back to their countries to help their people. We are here and we are sending millions of dollars in remittance every year to Pakistan. That is economical benefit to Pakistan. We are here, but we did not forget our country. We did not forget our country. Poor people, we all, I know, I can 100% assure that each one of us standing here, one way or other, sending money back home to support our family members, our neighbors, our relatives,
our poor villagers, whether it's about providing the food, shelter, clothing, or healthcare facilities. So, here we are today, demanding the Pakistan government. The time for talks, commitments, and promises is over. We want action. What we want? Action. We want action. What we want? Action. We want action. We don't want any more promises. We don't want any more commitments. We don't want anything else. Time for dialogues is over now. It is the time to take action. Then. अस्सलामुअलैकुम, मैं पासवो प्लेटफॉर्म की तरफ से एज अ सोशल वर्कर हूँ और मैं पहले तो मुबारकबाद दूंगा बिलावल भुट्टो को वज़ीर ख़ारजा अपॉइंट होने पर। उसके बाद बिलावल भुट्टो कितनी दफ़ा आ चुके हैं, यहाँ पे दौरे कर चुके हैं, लेकिन वो कभी कम्युनिटी से इंटरेक्ट नहीं होते और ये इशू पूरा 1 साल से चल रहा है TPS का, लेकिन उन्होंने कभी किसी को बुला के ये नहीं पूछा कि क्या मसला है, क्या मसाइल है। और ओवरसीज पाकिस्तानियों को ऑलवेज इग्नोर किया जाता है। कोई भी गवर्नमेंट है, चाहे तहरीक इंसाफ की हो, चाहे बिलावल भुट्टो की हो, तो बिलावल भुट्टो साहब प्लीज़ वेक अप। आपकी वालदा ने जमहूरियत की खातिर शहीद हुई हैं आपकी वालदा, और आप वुमेंस कॉन्फ्रेंस के ऊपर आए हुए हैं और आप वुमेंस को इग्नोर कर रहे हैं। सो प्लीज़ वेक अप। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि खाली एक लेटर आप लिख दें। ओवरसीज पाकिस्तानियों का एक असासा है कि एवरी ईयर कितने आपको ओवरसीज पाकिस्तानी डॉलर्स सेंड करते हैं, इकोनॉमी आपकी बिल्डअप होती है, तो आप इतनी आसानी से इग्नोर नहीं कर सकते पाकिस्तानियों को। सो प्लीज वेक अप एंड आप एक लेटर लिखते हैं प्लीज, ताकि हजारों लोग इससे फायदा उठा सकें और आपका इसमें एडवांटेज भी होगा, आपका वोट बैंक भी भरेगा और आपकी पब्लिसिटी भी होगी। The protest was organized by organizations like DRUM and PASWO.